I hope it is visible to all. Yes. Great, thank you so much. Uh, Yes. so if you look at the screen right now, you can see that we have taken a blank room for the purpose of example. And here, if we go into the 3D of this room, you can see the different walls here, right? Now, what Yes. we do is that first we will move on to, always we will use the room view to basically design anything, because it makes it easier for us to view the room, because the any wall or ceiling which is not required keeps getting hidden, so it becomes very easy for us to basically design on that particular wall. So now the first thing about a wall is that the most used thing is that you might want to add a color to your wall. That is a paint shade, any paint shade that you want, right? So you can select that particular wall, and in wall finishes, you can go into add from warehouse option. I'm sorry, you're going to fetch from store option, and herein you have one section which is paint. Under wall texture, you have paints. So there are a lot of paints that are already available here, and you can select any paint that you want to be added in that wall. So suppose if I select blue green, then this particular wall will turn into blue green. You can also, whenever you select any of the other walls in the drop down, all the use shades will be shown here, so you can select whichever one you want, right? So this way, the first thing is about how you can change the shade of a particular wall. But you can see that if you look at the wall, when you go into fetch from store, you can see under paints that there are 217 paints that you can see right now. But if I open the Asian Paints catalog, because the most commonly used paint is Asian paints, budget paints, or any other paints that you might be using. But for the purpose of discussion, we'll be taking Asian paints here. So you can see that any particular shade here that you want to use will have a RGB value. If the paint shade, usually these paint shades are adequate for you to use, but if there is a particular paint shade that you want to use which is not available here, what you can do is you can go into the admin portal, and herein under catalog, you'll be able to see, like we had discussed this in our previous sections also, you can see this is the, whenever you are doing catalog management, as in adding something to your catalog to use it, you have to understand this is the category, this is and these are subcategories and groups. So what happens is that if you look at the admin portal under catalog, you can see in finishes, you can see wall texture as a category, right? So you can track it in this way. If you want to see something in this particular options, then you can see wall texture. So go to your admin portal. Here under catalog, you can see wall texture. So when you click on wall texture, you will see two subcategories, like you can see in your design portal. You can to see two subcategories, right? Wallpaper and paints. So similarly, you can go into your admin, and herein you can see wallpaper and paints. What do you want? You want paints. So in paints, if you want to add another shade or something like that, right? You can simply do this. That you can add a subcategory here. Let's say for the Asian Paints catalog that we have right now, we'll just take any Asian paint shade here. So you can see any of the shade cards here, right? So you can select anything from there. Whether you want to take a digital image, you can actually take a digital image also. I seem to not be getting the proper image from here. So whatever shade you want from here, you can take a snapshot of it, or you can do any, you can basically select any particular shade here. And when in the admin portal, you can create a subcategory here. Let's say I'm creating a subcategory of white here. And you can give whichever order you want. If you want to see it in the first order, you can submit it. Order means at what stage, which number the particular item will be seen. So you can see that there is a white item that we have put, and we have written white here.
So we can see that we have added. So under paints, we will add a group which we are naming it as white, and we are naming putting in a number of number one here, and you can see this is the category, this is the subcategory, and you'll be able to see white once it is added here under, that is what is grouped. So you can see that a white category here is added. So here this is a group, and inside that you can add multiple SKUs. So you can simply select on add here, and you can add a material, whatever finish you are trying to add, the color that you're trying to add, you can add a high resolution image here. You can name it, you can put any description you want. You can also select the brand that you want. We already have the most common brands available, like Nerolac, Asian Paints, etc. Or if you want to add more, you can do that as well. And you can simply select that and add the material here as per your requirement. Just add the finish here, and you'll be able to have another finish as per your requirement. And once you add this particular finish here, like you add a material here, in the design panel, you'll be able to see that also as an option, and you can select that paint and use it in your wall. Just like paints, you also have wallpaper options here. Like you can see there are multiple wallpaper options that you might want to add. So let's say I'm selecting this wallpaper here, then the wallpaper will get added accordingly. Now, why did I go into the entire discussion about how to add a finish? Because this is the same process that you'll be using to add any wallpaper also. If you have multiple wallpapers that you as an organization use, then you can go into wallpaper here, and you can add different wallpapers in the same way that we did for the paint. Like you will add a group here, you will name the uh, group however you want, and after that add a SKU to it. Like suppose here in paint we had added a white finish here. So same thing, you can add, and you can go into add from SKU here and add whichever the digital image of that particular finish, you add it, and then you'll be able to use that wallpaper also. So this is the reason why we were going into that. So wallpaper, you can add whichever wallpaper you want. Let's say I'm changing the wallpaper here. So in this way, you can add the wallpapers also. You also have an option that if you want, on a particular wall, if you want to use like any other texture paints or anything, then you can add another category here. Like if you look at the warehouse here, when you go to add from warehouse, you have more finishes that are also available for wall textures and all. You also have like glass textures and different textures for external finishes as well. So you can go ahead and add all these into your catalog, and add, you can use them in your designs as well. So even the add from warehouse option has other textures that we offer. You can use that, or you can add something of your own as well. So this covers the very basic of things, which is paint, wallpaper, and texture paint. Now, what about certain things like हेलो मैम. wall? हेलो. Sorry. मैम, मैम एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हम कोई भी इमेज गूगल से डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे टाइल्स का इमेज हो गया या कोई भी है, हमें अपने मन पसंद का कोई भी टाइल्स वगैरह ऐड करना है किचन में, तो हम कोई भी इमेज को डाउनलोड करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं. जी, यू कैन गो, आप कर सकते हैं। आप एडमिन में जाके, जैसे हाँ जी. हम आपको ये बता रहे थे कि हाँ. अगर सपोज आप यहाँ पे फेच फ्रॉम स्टोर करते हैं, तो फेच हम्म. फ्रॉम स्टोर करते वक्त यहाँ पे जो वॉल टेक्सचर ऑप्शन है वो जी. आपका कैटेगरी है, राइट? तो हम्म. आप जब एडमिन पोर्टल में जाए तो कैटलॉग में ढूंढिए कि वो कैटेगरी कहाँ पे है, ठीक है? क्योंकि ठीक है. अगर आप फिनिशेस में देखेंगे फिर आपको दिखेगा कि वॉल टेक्सचर है, राइट? कैटेगरी हम्म. है, तो उसके अंदर आपको कहाँ डलवाना था? आपको वॉलपेपर के अंदर कुछ डलवाना है, तो इसमें हम्म. देखिए कि वॉलपेपर है, तो इसके ठीक है. अंदर आप ऐड कीजिए। जैसे आपने स्पेसिफिकली पूछा कि आपको टाइल ऐड करवाना है, तो हाँ जी. हाँ जी. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई टाइल चेंज करना चाहे, हम्म.
सपोज ये वाला टाइल आप चेंज करना चाहते हैं, तो टाइल पैटर्न में जाके अगर आप फेच फ्रॉम स्टोर करेंगे, ये फेच हम्म। फ्रॉम स्टोर हमेशा रेलिवेंट ऑप्शन ही दिखाता है। तो आप हाँ, जो हमारे पास है। हाँ। हाँ, तो वो कहीं भी आप ऐड करेंगे तो ऐसे नहीं दिखेगा, आपको हम्म उस पर्टिकुलर एरिया में ऐड करना पड़ेगा। जैसे इसमें दिख रहा है आपको कि फ्लोर टाइल्स खुल रहा है, हम्म। कारपेट खुल रहा है, क्योंकि फ्लोर पे फ्लोर टाइल ही लग सकता है, या तो कोई जी कारपेट जी। लगा देगा। तो आप क्या करेंगे कि फ्लोर टाइल का कैटेगरी ढूंढेंगे, तो आप फिनिशेस में देख सकते हैं फ्लोर टाइल का कैटेगरी। अब ठीक फ्लोर है टाइल मैम। कैटेगरी में आप अगर सपोज फ्लोर टाइल में जाएंगे यहाँ पे, या कहीं हम्म भी ऐड करना चाहे, यहाँ पे हम्म आप एक नया ग्रुप बना सकते हैं, आप ऐड ग्रुप कर सकते हैं। और हम्म लेट्स से टेस्ट फ्लोर टाइल ही लिख देती हूँ। हम्म टेस्ट फ्लो टाइल आप ले रहे हैं इसको, इसका ऑफिस भी कर रहे हैं और आप इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, हम्म। तो जैसे आपका ये टेस्ट क्रिएट हुआ, ये टेस्ट क्रिएट हुआ, तो इसमें आप ऐड एसक्यू कर सकते हैं। अब हम्म एसक्यू ऐड करेंगे तो आप कोई भी टाइल का टेक्सचर, सीमलेस टाइल टेक्सचर आप ले लेते हैं। हम्म। तो सपोज आपको ये वाला टाइल यूज करना है, तो आप उसका डिजिटल इमेज जैसे आप डाउनलोड करेंगे, अभी आप हम्म वाला आप सेव कर लीजिए, सेव इमेज कर लीजिए। हम्म और यहाँ पे आप जब ऐड करेंगे एडमिन में, तो एडमिन में यहाँ पे आप जिस जो भी आप उसको नाम देना चाहे आप नाम दीजिए, डिस्क्रिप्शन, ऑर्डर, वो सब आप डिफाइन कर सकते हैं। हम्म। और आपको थिकनेस डिफाइन करना पड़ेगा उस टाइल की, ताकि ड्राइंग्स वगैरह में करेक्ट आए। सपोज टाइल की थिकनेस मान लेते हैं 10 mm। ब्रांड कुछ भी आप जो भी सिलेक्ट करना चाहे, एंड मटेरियल में आप जब सिलेक्ट करेंगे, तब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वो है क्या। अगर टाइल है तो आप टाइल 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 या जो भी फिनिश है उसको आप हम्म select कीजिए और फिर बेस टेक्सचर अपलोड कर दीजिए। तो बेस टेक्सचर जब अपलोड करेंगे तो आपका जो जेपेग है वो आप यहाँ हम्म पे upload कर सकते हैं। वो अपलोड हो जाएगा, और अपलोड होने में ये आप उसका टेक्सचर का जो आप अपलोड कर रहे हो, आप उसका और हाइट भी स्पेसिफाई कर सकते हो, या आप डिजाइन पे भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि वो कितने का आपने टेक्सचर डाला है। तो सेम हर सॉफ्टवेयर में होता है, आपको डाल सकते हैं। और वैसे करके आप ऐड कर देंगे इसको, तो ये एक बन जाएगा आपका टेक्सचर। एक्सक्यूज मी। अरे हाँ जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मुझे एक चीज कंफर्म करनी है, ये एडमिन का कहाँ से खुला हुआ है आपका? जैसे हम डिजाइन में अगर हम खोल रहे हैं तो डिजाइन में खुल रहा है, देन एडमिन वाला जो इन्फर्निया का है वो कहाँ पे खुलेगा? admin.infernia.com। ओके, थैंक यू। या तो आप ऐसे करके यूज करेंगे तो आप अपने डिजाइन में अगर इस चीज को जैसे रिफ्रेश कर देंगे, अगर तो आप कोई भी एसकेयू ऐड करने के बाद एक बार अपना डिजाइन रिफ्रेश कीजिएगा, ताकि वो हम्म sync हो जाए एग्जैक्ट कैटलॉग के साथ, और उसके हम्म। बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। आप देखिए, ठीक है, थैंक यू मैम। तो दिस इज ट्रू फॉर पेंट्स, लैमिनेट्स, फिनिशेस, एनीथिंग। तो बेसिकली यही प्रोसेस आपको करना है कोई भी टेक्सचर आपको ऐड करना हो तो, राइट। So, moving back to what we were discussing, we were planning on having a discussion on the next step, which is a wall cutout. In the particular walls that you have, in the walls that you have, like I would just like to show this once for everyone to just understand this. कि यहाँ पे floor tiles पे test me, you can see that this particular finish is now an option, and you can select it and use it wherever you want, right? So in this way, you can put any finish that you want. So what we're going on about discussing was
the next thing, which is about wall cutouts. Suppose when you're designing a particular space, you want to have certain cutouts in your wall. So you will select the wall and you'll go into tiling and cutting tool. Herein, you will add a shape to it. Let's say you want to have a arch sort of a design here. So you will select any arch or circle tool, and you can create an arch as per your requirement. Like let's say I want to have a arch. So first I will create the bottom wall, which is be like 6 feet. So I'll draw a 6 feet wall here, and then I will create 1200 opening, and then I will draw this particular place. After I draw this, I will select the 3 arc option, and then I will create a curvature here. Like I'm creating a curvature here like this, and I will delete this particular line here. So what happens? This becomes a shape now. So when this becomes a shape, I can apply it and I can create whatever cutout I want. I can just select the cutout option, and depending on the thickness of the wall, let's say it is 150, you can select any value which is above 150. So you don't have to go and actually select or check the thickness of the wall. You can randomly select like 200 also, but anything which is higher than the thickness of the wall, basically, then what will happen is when you are putting the depth of the cutout as higher than the thickness of the wall, then you can see that the cutout is created accordingly, right? So in this way, cutouts are getting created. Then comes your next option of when you want to create cutouts along with creating. Let's say you want to create different types of cutouts. So I'm going into tiling and cutting tool here, and I want to have like multiple cutouts here. So what I'll do is I'll again add a shape, let's say, just repeating the step one more so that people are aware of how to get it done. Let's say I'm having a shape like this now, and I'm using the 3 arc tool here to create a curvature or any shape that you want, right? Whatever shape you want, you can create it using these tools here. Line, arch, circle, rectangle, polygon. You can use these tools and create any type of shape you want. So after you create the shape, let's say, you give the shape a property, whichever property you want, whether you are extruding it or tiling it or cutting it. The concept remains basically same. We will try out all the options, but the concept is same. You have added a shape on this wall, you've given it a property. Whether you want to cut it, you want to extrude it, or you want to tile it. I'm cutting it. Now, when I'm cutting it, we will be taking questions at the end of the discussion. Otherwise, we will not be able to finish off all the things that we are discussing, but we will spend a decent amount of time at the end of the call for all the queries that you have, right? For whoever had raised the hand. So that is the thing. And now let's say I'm giving a cutout. The property of the shape I'm giving it is a cut of a 200 mm. So it has to cut inside the wall at 200 mm depth. So if I do that, then what I can do is I can now change the location of this. Sorry. Now what I can do is I can select this particular shape and I can copy it or move it however I want. Let's say I'm selecting this here and I have now the option of this particular shape to copy it, like copy it fixed number of copies I want or fixed distances I want. I want a fixed number of copies. I want 2 copies of this, and I will just select these particular copies like this. So you can see that I have created copies like this. And when you click on it, there are copies that are created equidistant space. And when you go back, you can see that the cutout is created like that. So even for architectural clients who want to have like designs of the same shape that you have to repeat throughout, you want to create archways, etc. You want to create doorways, etc. So you just have the concept stays the same. You select the wall, you go into tiling and cutting tool, you create the shape that you want and give the shape a property. Now, same concept that comes, let's say we remove all this, okay? Let's do something. We have already checked the cut tool, so we will select something which will show us how to create rafters now, let's say. So let's say I'm adding a shape here. I'm using the rectangle tool.
we have created enough curvature tool. So we will select something which is a rectangle tool. So let's say I'm creating something which is 80 mm in width, and I'm creating the shape here. Once I create the shape, I will select the particular shape. I'll give it the properties that I want. I want a rafter will have an extrusion, right? So it'll have an extrusion, and I give it a property that I want to extrude it by 30 mm. So I'm giving it a 30 mm extrusion, and once I'll give it a extrusion of 30 mm, selecting the rafter and giving it an extrusion of 30 mm. And I can also change the material of the rafter however I want. Let's say I want to have a wall texture only. I will create a texture which is a paint of blue shade, let's say, right? And I'm painting it in that way. And I am what I want is once I've given the properties to that particular rafter, I'll copy this rafter throughout. So what I'll do, I'll use the copy tool here, and when I copy it, I can actually select any of these options, whether I want to multiply it by a fixed distance or whether I want a fixed number of copies, in which case you can specify the distance of the first and the last, or you anything which is a curved copy you want. Even in that case, you can do that. So let's say I'm selecting a fixed distance, and in the fixed distance, I'm selecting a distance of 100, uh, maybe 100 mm. So you can see now that there are multiple copies that are getting created. So halfway through, I will stop it so that these are the rafters that I'm getting created. And I'll go back, and you can see that these rafters are now created accordingly. So in this way, you can create any sort of designs actually, not just rafters of horizontal rafters. You can also create like vertical rafters or however you want. So in this way, you can create any shape. Again, repeating it, the concept remains same for a wall panel. You simply have to create the shape, give it a property material, and copy it as per your requirement. Now, let's say I have created these rafters. There are also certain designs where the design calls for a change in individual rafters. So what you can do is, if suppose sometimes there are uneven distribution of rafters, sometimes there is change of shape. So you can again always edit that particular shape, right? So let's say if you are creating rafters, uh, this is the horizontal rafter option that we took. So this is done. So we will go into, let's say we take another option here wherein we'll create an uneven distribution of horizontal rafters. Here we took the vertical rafter option already. So we are creating something which is a let's say a 40 mm here, and you'll apply it, and you can take this particular rafter and you're extruding it by, let's say, 30 mm again. And what you can do is that uh, you can give it any texture that you want. Again, we will take the same texture for reference. And when you're taking this particular texture, the same concept stands again. Then you go into copy, and you take the numerical value of whatever you want to do, like you extend it, and you want fixed distance of 100 mm. So what you'll do is that you'll go into copy, you'll go into fixed distance, multiple copies. You have already put it as 100 mm, and you can see now that there are multiple copies that are getting created. After multiple copies getting created, if you want to change the width of any particular copy, you can simply go into edit shape, and let's say you want this particular shape to be reduced, right? You can simply select it, and you can change the width. You can change the edge location of wherever you want. Let's say this particular you changed it, then you can go into anything that you want. If you want to have particular, if you want to numerically specify that I'm changing or shifting the edge, then you have the option of numerically specifying also. That you don't want to like arbitrarily do it, or for only for visual purpose, you want to do it exactly, then you can shift the edge by a particular dimension also. I'm just graphically doing it here, like for the purpose of discussion, but you can actually do this for any particular vertical or horizontal
panels here. So you can actually do that. And when you go back, you can see that on the wall, these panels are getting created accordingly. So if there are designs that you're creating, like we have quite a popular design option that people use are rafters, and they have multiple widths of it, and they display it accordingly behind TV units or however. So you can create these rafters accordingly. So one important thing about rafters that we wanted to discuss, while this is not a very correct way of doing it, but there has been a lot of requests, and we thought we will just discuss this particular option also. So suppose I'm adding a rafter here, right? I'm adding a rafter here and applying it, and I giving it a property of extrude by, let's say, 100, not 100 mm, 75 mm, and I'll give it a finish of anything that I want. Let's say a wall texture finish I'm giving here. And what I'll do is, now you can see that this particular um, rafter is on the on this particular wall. Now, if you want to have like a partition in between your room, you want to have rafters in between your room. So what you can do is that in tiling and cutting tool itself, you can select this particular shape, and in front shift, let's say you're giving a front shift of 800 mm. So the distance of the rafter from the wall is 800 mm. You want to put, then you put 800 mm front shift here, and when you go back, like I'll also multiply this. I'll just copy this also once so that you can understand this better. So you can see now that the rafters are placed accordingly. Whether you can make it thinner or you can make it whatever designs you want, you can have links in between, because it's just about adding shapes, right? You can shift it forward, and the rafter will get added accordingly. If you want to have room divisions or items like that, you can actually use it in this way also. So rafters is a discussion that we can do in terms of wall panelings like this. So let's say I'm going to remove this particular rafters now, and then let's go into things like, let's say you want to add any along with rafters, you want to have any sort of tiling or a pattern that you want to use. So we will simply, so on one side, you have rafters. Let's say till here you have rafters, and then after that you want to have something which is like a wall molding as such. So you can add a shape like that. You can use a rectangle option, and let's say you want to have 3 frames here of this particular, you can specify the heights and all when you are designing it. So you can see that I have made a shape like this. Along with this, what I'll do is that I will offset this particular shape. Always remember, add a separate shape. Don't work in that same shape itself. So you can add a separate shape and then use the offset tool. And when you hover over the outline of the offset, you'll be able to specify this what dimension you want. The thickness of the molding that you want, let's say you wanted a 25 mm, you can specify. I'm sorry. When you're doing the offset, uh, ensure that on the left hand side there is a copy option and there is a move option. When you're creating moldings, that means that you want the same outline to be copied so that it becomes a outline there, right? So you take copy. So the mistake I made was I did not change it. It was in move there. So if you want, like, you will use move if you want to have the entire space selected and then outline and like that. You can use that also, and there's a separate use case for that. But here, let's say I need the copy option. So when you are copying it, you can see that now this enclosure, this is the enclosure that is there, and this gets selected. Now I'll apply it, and after I apply it, you can see that this is a shape that is created. When I select this particular shape here, I can give it an extrusion of whatever I want. 25 mm seems to be decent, so I keep it there.
Then I can copy this also. Like I can again using the same thing. Like here, I'll have fixed copies. I'll have copy of two because I want three of it, right? So I'll simply select and I will. You can see that, right? When you are selecting this, it will equidistantly divide all three. So you don't have to go and calculate everything and equidistantly divide. It will equidistantly divide all the three frames in between. So you can see the three frames got added here. And when you go back, as per the finish that you would have selected on the frame, you can select the frame finish also. You can see now that the moldings are created here. If I go into this here and go into tiling cutting tool again in this view, if I want to add any finish to this also, I have the material here. If you want to do that, you can definitely do that as well. Now let's go back on this and let's try to decide if I want to have a wallpaper around inside each of these three moldings. I want to have wallpapers. Then how do I create that? What I'll do is I will select this particular moldings again, and inside these moldings, I'll add one more shape because you have to define that in the inside this shape, I want a wallpaper, right? So what you can do is you can create a shape inside this, and when you create that particular, just basically specify in which area you want the wallpaper to be there. So for a wallpaper, the thickness won't be 20 mm, of course. So you can just keep it 1 or 2 mm, however you want. And inside this, you can change the material. When you select the material option, you will also see in wall texture wallpapers, right? So you can go into wallpapers and we will be able to select like whichever wallpaper you want to select, you can select in that particular space there. So let's say I'm selecting, you have quite a lot of wallpaper options. You can add your latest collection of wallpapers also. So let's say I'm selecting this particular wallpaper here and I'm selecting it here. Then inside each of this shape, again, if you want to add different shapes, different wallpapers to all of them also, you can do it. Like inside this also, you can repeat the same process and you can add wallpapers. So, but we will go back here and we will go back here and you can see that the wallpaper gets created like this. So in this way, you can add wallpapers also inside a particular molding. You can create wallpapers also. Now, not just wallpapers, people create moldings inside moldings as well, right? So if you look at the tiling tool, that is a very simple thing that you can do. You can simply select this particular molding and you can edit shape here. And inside this, when you offset it, like you can see, you can offset it further, right? Whatever offset you want, you can offset it further. And again, you can offset it inside this. Like if you want two moldings, then you can offset it and create multiple moldings also. So this is the example wherein you'll be able to use like multiple moldings inside each of them, depending on whatever dimensions you want. If you want the inside molding to be of a higher thickness, you can change it accordingly, right? You can do that as per your requirement. Then let's say in this particular wall, in the entire wall, only after the rafters, I want a wallpaper to be added. Then what will I do? I will select, it's the same concept of you add the shape as per the space that you want. And when you add the shape, you simply select this particular shape and you add the wallpaper that you want. Let's say here I'm taking a wall texture here and I'll not take a wallpaper because you've added a wallpaper. I'll take a simple paint or something here, like a gray paint maybe. And when you're adding this gray paint, what happens is that you're adding multiple textures or multiple shapes, right? But this paint is going to be at the back. So you can actually move it down. Like you can move it down. You can move it down further and you can correctly put it that this is the last finish that needs to be seen. And since this is a paint, I'm giving it at 1 mm. So you can actually prioritize as to what, like how you have in a PPT or in any Photoshop image that you do, right? You'll have different layers that you're putting. So you can actually put layers like this, and you can work around that. So once you do that, you'll be able to see that this is how the wall paneling is happening. Now, once these sort of wall panelings are done, there might be other designs also that you might be interested in doing. Like you might be interested in having cutouts also, not just
like you might have a certain cutout inside a particular shape. So let's say in this particular molding, you want to have a cutout. So when you go to tiling and cutting here, let's say uh, you use a rectangle option here, and in this particular part of your wall, you're having a cutout. So let's say I click on apply, and when I select this particular shape, I will give it a property of cut, but I will not give it a property or uh, I'll not give it a depth too high. I'll give it a depth of only 25 to 30 mm so that it only has a small cutout. So let's say I'm putting a 30 mm depth here, and I'm also shifting the material down here so that the front material gets reflected here. Okay, when I go back, you'll be able to see that there is a cutout that is there. In a lot of apartments, you would be able to see cutouts like this which are created. So if you want to create something like this is the way you can do it, right? We seem to have a lot of questions which have come up. So making an exception here, we will just discuss this for 5 minutes, and then we will go back to what we were discussing. Pooja, Pooja, you had raised your hand. Jane, Neha Dua, received raised hands, but looks like Simran. Is there anyone who has a query? Because I seem to have a lot of raised hands, but um, हेलो मैम, एक्चुअली मैं किचन में मैम जैसे गोला प्रोफाइल एक होता है ऑप्शन, अभी अपने सॉफ्टवेयर में जी प्रोफाइल और एक दो I'm sorry, वो एक सेक्शन है गोला प्रोफाइल का जो आज के सेक्शन के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है. तो आप अगर चाहे तो हम किचन का एक सेशन लेंगे, आप उसमें जरूर आइएगा, हम डेफिनेटली आपको मैम एक्चुअली मुझे किसी क्लाइंट को अभी अपने ड्राइंग में वो गोला प्रोफाइल देना था, तो बाकी चीजें हो चुकी, या तो कोई वीडियो हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं मैम. गोला प्रोफाइल आपको ऐड करना है ना? हाँ, गोला प्रोफाइल उनको दिखना है, मतलब हैंडल एज किचन रहेगा, उसमें सिर्फ गोला प्रोफाइल रहेगी. तो आप कोई भी चेंज हैंडल में आपका प्रोफाइल हैंडल्स भी आता है, राइट? गोला प्रोफाइल हैंडल है मैम, उसमें गोला प्रोफाइल नहीं है. गोला प्रोफाइल अलग से एक होता है ना, गैपिंग दिखती है थोड़ा सा. तो आप ऐड फ्रॉम वेयरहाउस पे चेक कीजिए, उसका ऑप्शन होगा. नहीं है मैम, उसमें तो नहीं था. आप अपने सीएसएम को एक बार कॉल कीजिए, दे विल बी एबल टू हेल्प यू आउट विद इट. ओके मैम, थैंक यू. ग्रेट. नेहा दुआ, does anybody else have a question right now? एक्चुअली हमें ना फर्नीचर का रहता है, फर्नीचर कैसे प्लेस होंगे, अगर आपके पास उसकी भी कोई वीडियो हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं. फर्नीचर कैसे प्लेस करेंगे? एज इन आप अगर कोई भी फर्निश टूल पे जाएंगे, तो फर्निश टूल में जाएंगे तो यहाँ पे जैसे आपके बेड्स है या ये कोई भी बेड्स रहता है वगैरह, तो आप वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं उसको और प्लेस कर सकते हैं. अगर हमें कुछ अपना ही डालना हो बेड का डिजाइन, हाँ, आपको आपके पास अगर उसका 3D मॉडल है, तो जैसे हमने अभी आपको एडमिन में दिखाया था कि आप if I don't have any 3D model, it can be possible to make that and place that. सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स कैबिनेटरी. अगर आपको 3D अगर आपको फर्नीचर वगैरह डलवाना है तो फर्नीचर का आपको 3D मॉडल चाहिए होगा. आप आज के डेट पे कैसे डलवा रहे हैं? जैसे मुझे 3D, हमारा फर्नीचर का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ भी डिजाइन हम बनाते हैं उसको खुद मेक करके अगर हम एडिट करना चाहें वो कैसे करेंगे? तो लूज फर्नीचर जो होता है वो कैबिनेटरी नहीं होता है. फर्नीचर लाइक बेड्स, ड्रेसर, इस टाइप का, सोफाज हो गए. हाँ, तो लूज फर्नीचर्स जो होते हैं वो दे आर नॉट पार्ट ऑफ मॉड्यूलर और कैबिनेटरी जो एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर सके. आपको उसमें मॉडल ही बनाना पड़ेगा. आप कोई भी ऐसे मॉडल बना के आप अपने कैटलॉग में ऐड कर सकते हैं. जैसे बेड हो गया, आप उसमें अपना 3D मॉडल ऐड कर सकते हैं. आप यहाँ पे एक SKU डाल के यहाँ पे ग्रुप जैसे आपको डलवाने के लिए मैंने अभी बोला था, उसके अंदर आप एक SKU डाल सकते हैं. यहाँ पे आप 3D मॉडल अपलोड कर सकते हैं. तो 3D मॉडल अपलोड कर देंगे तो वो आपका कैटलॉग बन जाएगा.
फर्नीचर में जो मटेरियल चेंज करूँ वो कैसे? फर्नीचर में मटेरियल्स कैसे चेंज होंगे? और हाँ, अगर आपका ये पर्टिकुलर फर्नीचर जैसे मैंने डलवा दिया तो डालने के बाद आपका यहाँ पे मटेरियल्स खोलेंगे, यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर मॉडल में जितने भी मटेरियल है आपको दिख जाएगा कि एक वुड है वुड मैट्रेस, और एक मैट्रेस है। तो अगर आपको वुड चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं इसमें, और जो भी आपकी फिनिशेस अवेलेबल है उसमें से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर मेपल ले लेती हूँ तो ये चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। तो आपको मॉडल डलवाना है और उसपे मटेरियल्स जो है जो भी चेंज करना है, आप मटेरियल्स वगैरह चेंज करते रह सकते हैं। ओके। सृष्टि आप जैन, कुछ इनकी मेरी डिटेल्स भी शेयर कर सकते हो, लाइक शॉर्ट क्लिप्स होंगे आपके पास, वीडियोस? श्योर, आप एक बार इस पे अपने सीएसएम को पिंग कर दीजिएगा इंटरकॉम पे, वो शेयर कर देंगे। ठीक है। राइट, सृष्टि जैन। हेलो, या हाय मैम। मैम माय पॉइंट इज दिस कि इसके अंदर जो आई थिंक आपके जगह पे 2-3 लैपटॉप चल रहा होगा। हाय मैम, एक्चुअली माय पॉइंट इज दिस कि जैसे अगर हम लोग अपना जैसे अब हम लोग अपने फर्नीचर्स वगैरह ऐड ऑन कर रहे हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, जैसे हम लोग अपने फर्नीचर इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, ठीक है, राइट। अब जैसे एक रूम हम लोगों ने क्रिएट कर दिया, बट इसके अंदर मुझे क्लाइंट को पीडीएफ वगैरह सेंड करनी है, तो वो कैसे बनेगी? पीडीएफ एज इन क्लाइंट को अगर मेरे को ये रूम का व्यू वगैरह शेयर करना है, जेपीजी जैसे हम लोग 3D मैक्स वगैरह के अंदर यूज करते हैं, तो वो कैसे बनेगा? अगर आप जैसे आपने कोई डिजाइन बनाया और इसका सिर्फ आपको स्केची व्यू चाहिए, यही व्यू चाहिए, आपको रेंडर नहीं करना, आपको यही व्यू चाहिए, तो आप कर सकते हो कि आप यहाँ पे रेंडर में आपको एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आता है। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा इमीडिएटली। ठीक है। और मैम इसके अंदर जैसे मैंने लाइट्स लगाई, रेंडर व्यू इसके अंदर कैसे दिखेगा? लाइट्स लगाई तो मतलब, सॉरी, रेंडर व्यू कैसे शो कैसे होएगा इसके अंदर? एग्जैक्टली रेंडर व्यू मेरा दिख कैसे रहा है? जैसे अगर मैं अभी मैंने रेंडर किया नहीं है, अगर मैं Okay. रेंडर करूंगी तो आपको गैलरी में वो दिख जाएगा। कोई भी रेंडर करेंगे ना तो वो गैलरी में दिख जाएगा, वो आपका डाउनलोड हो जाता है, ठीक है, राइट। तो वो आप इमेज यूज कर सकते हैं उसमें। आई थिंक आप यू माइट बी अ न्यू क्लाइंट, राइट? यस, एक्चुअली दैट्स व्हाई मेरा अभी बेसिक भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, बेसिक में भी मुझे काफी प्रॉब्लम आ रही है। तो आप एक बार, वो हमारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, you can do that. Those are very detailed and all, and we are coming up with more certification courses for renders. अभी advanced cabinetry वगैरह launch हुआ है. We are coming up with more certifications for rendering and catalog management, etc. You can do certifications around that to understand things better, ओके, right? That's about it. So Pooja, you also have a query? यस मैम, मेरे को बेसिक क्लियर नहीं है इसमें, मेरा आपको साउंड आ रहा है? हेलो, क्या हाय? यस मैम, मेरे को बेसिक क्लियर नहीं है, कल का सेशन मेरा नहीं लगा था। कल का मैम ले रहे थे, हाँ जी, फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं है मेरे को। सॉरी, देन आप एक काम कीजिएगा, इफ यू आर अ न्यू क्लाइंट, हम ऐसे वेबिनार्स लेते रहते हैं। आप और आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कर सकते हैं, और हम वेबिनार्स लेते रहते हैं लाइक फॉर किचन एंड एवरीथिंग, तो आप वो सब भी अटेंड कर सकते हैं। आज आप सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है। पर आप जैसे जैसे थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होता है, बिकॉज पिछले महीने हमने हम लोगों ने लाइंस वगैरह क्रिएट की हैं, स्टार्टिंगली बेसिक है रूम क्रिएट करने से पहले, वो भी मेरे को क्लियर नहीं है ना। अभी मैंने तो आपकी पैनलिंग ही आज देखी है। हाँ, तो ये वेबिनार्स होते हैं सबके लिए, तो आप अपना बेसिक ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद वाले वेबिनार्स आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। सो वी विल जस्ट, हमको 2-3 पॉइंट्स और डिस्कस करना है, देन वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस। सो अभी आप देखेंगे, इफ यू लुक एट द पर्टिकुलर डिजाइन दैट वी हैव राइट नाउ, not just these rafters and all, you might also have requirements, you might have like, एक्सक्यूज मी मैम, हमें बेसिक कहाँ से सीखना होगा? एक्चुअली वी आर वर्किंग ना। okay, आपके who's a CSA?
हाँ जी, सेल्स कौन है? कस्टमर सक्सेस मैनेजर अंकिता। अंकिता। हाँ, तो आप अंकिता से एक बार पूछिए. अंकिता विल सेंड यू द विल सेंड यू अ लिंक जहाँ पे आपका सारे रहेंगे. अगर आपको चाहिए अभी चाहिए तो फिर आई एम जस्ट पोस्टिंग इट ऑन द जी चैट ग्रुप हियर एंड यू कैन प्रॉब्ली चेक इट आउट अकॉर्डिंगली, राइट? या ओके, बिकॉज पहले हमें बेसिक सीखना, उसके बाद ही हम एडवांस कर पाएंगे ना. ये तो अभी हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो एडवांस कैसे सीख लेंगे? नहीं, आप ये वेबिनार है तो ये सबके लिए होता है. आप अंकिता को एक बार मैसेज कर दीजिए, वो आपको बिगिनिंग जो आपको ट्रेनिंग का होगा वो आपको भिजवा देगी. यू कैन डू द ट्रेनिंग अराउंड दैट, राइट? Webinar is for everybody, so you need to wait and do your session and then come to the webinars, right? आप अपना बेसिक का कर लीजिए, फिर आपको वेबिनार्स इजियर लगेंगे, आपको रेलेवेंट लगेंगे. हेलो Right. हेलो मैम. We will take questions, but we'll take them in another 5-10 minutes, right? We have a couple of more things that we want to finish off, and then we will take questions. So, the one more thing that we wanted to discuss was that when you look at any particular wall, you might also have a requirement जहाँ पे आप we want to add cornices. Like cornices here, you can simply click on the wall and you can select wall cornices here. And when you select the cornice, you can see that a wall cornice gets added here. You also have a drop down option here wherein you can change the shape of it. Like we already have certain profiles which are preset profiles for you to check from. But if you want to create different profiles or edit the active profile, you can go here and you can edit the profile again using any of the shapes here. Suppose you want, we have this particular profile is a sharp edge profile. But if you want to have anything which is a 3-arc profile, let's say, this is a 3-arc profile and you can select, you can create a profile around this. And when you create any profile, you can basically change the shape of it. Let's say I'm changing the shape here. And I'm creating a shape like this here. हम इसी शेप को पीओपी में भी ऐड कर सकते हैं. आप सॉरी पीओपी में जैसे कैसे? जैसे पीओपी अगर हम फॉल कर रहे हैं, फॉल सीलिंग बना रहे हैं जी और जी उसके टक्कर पे सेम मोल्डिंग हम कॉर्निस लगा सकते हैं. ये तो आपने वॉल और सीलिंग के एकदम उसमें लगा दी एज पे. जी जी. अभी मैंने एक फॉल दिया एंड फॉल की टक्कर पे मैं ऐसा मोल्डिंग अगर बनाना चाहूँ तो आप ये कर सकते हो कि इसमें अगर इस सीलिंग में आप फॉल सीलिंग बना रहे हो, आप कोई भी फॉल सीलिंग बना रहे हो जैसे उसमें एक शेप डाल देते हैं और इसको हम एक ड्रॉप दे देते हैं. कोई भी ऐसे 75 mm का ड्रॉप, 100 mm का ड्रॉप दे देते हैं. तो ये आपका बन गया ऐसे. तो आप ये क्या करेंगे, ये जो प्रोफाइल है आपका, तो आप कॉर्निसेस में यहाँ पे एडिट प्रोफाइल करेंगे. तो इस प्रोफाइल को आप ऐसे बना दीजिए कि इसका जो शेप है, तो इसमें 100 mm का गैप बना दीजिए ऊपर की तरफ ही. जैसे ये वाला जो शेप है, इसको हम शिफ्ट डाउन कर लेंगे 100 mm. ये अगर ऊपर की तरफ चला गया आपका, तो आप 100 mm का उसको मतलब और स्पेस दे सकते हैं वहां पे, और ये वाला शेप आप मॉडिफाई कर सकते हैं. आई एम सो सॉरी, इसको आपको नीचे डलवाना पड़ेगा, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट ऑफ दिस कि आपको ये शेप जो है ये ओरिजिन से आपको नीचे डलवाना है बेसिकली, ठीक है. राइट? आप शेप मिरर भी हो सकता है. सॉरी, इसको शेप को मिरर भी कर सकते हैं क्योंकि ये अभी जो है वॉल की टक्कर पे आ रहा है. हमें ये पीओपी की टक्कर पे करना है, लाइक पीओपी फॉल जैसे हम दिखाएंगे उसकी एज पे करना है ये. हाँ हाँ, तो मैं कर देती हूँ आपके लिए. जैसे आपको इसके नीचे 100 mm भेजना है उसको,
इस शेप को आप नीचे भेज दिए, इस शेप को भी आप 100 mm से नीचे भेज दीजिए, और यहाँ पे जो भी आपका शेप था इसलिए आपको 100 mm यहाँ पे छोड़ देना है। तो ये आप देखेंगे कि ये कॉर्नर्स जो है जहां से आपको स्टार्ट करना था वहीं से स्टार्ट हो रहा है। क्या आपको ये डिफरेंस दिखा? जैसे ये 100 mm का कॉर्नर्स जो है वो ढक चुका है, आपको उसके नीचे से ही आपका डिजाइन स्टार्ट हुआ है। तो आप वैसे कर सकते हैं कि आप कॉर्निस का जो प्रोफाइल है, क्योंकि हम कॉर्निस जो है उसको शिफ्ट करने का ऑप्शन नहीं देते, हम कॉर्निस का आप प्रोफाइल में आप 100 mm एक्स्ट्रा डलवा सकते हैं अगर आप चाहे तो। So that was about cornices here. Once you have done about cornices, we want to discuss one more point here, wherein suppose you have any sort of a design which is sort of like a back panel or a laminate finish, right? So what we can do is you can select this particular wall again, and when you're creating a shape, you can also create like different sort of shapes here. Let's say you want to have a shape like this, a laminate shape here around this. So you can create different types of shapes as well. So let's say I'm creating a shape like this, then you just have to draw the entire space that you want. You can draw whichever shape you want, and then you can give it a particular finish. Let's say I am creating multiple shapes around this because I want to have like a back panel made for a kid's room or any other finish as such. So if I'm creating something like that, then I can create, sometimes the designs that we have, all the bottom edges are of a certain finish and the wall edges are of a certain finish. So you just have to add shapes accordingly of this, and then you can add whichever, all these will have the same properties, and you can add any finish that you want for it. Let's say if you want, let's say a yellow shade, so you can select any sort of a shade that you want, and you can create designs like this also. If you want to have multiple design shapes around that, you can do that. This stays true for any elegant design, the laminate designs, finishes as well. You can also add panels if you want. You can insert and you can go into furnish. You can go into custom panels here also. So if you want to add anything which is like a TV back panel, for which it's not just something that you're fixing on a wall, but you want it to be part of your cabinetry as well. In that case, you can go into adding custom panels on this. Like you can add vertical custom panels of wall units. And when you're adding this, you can see that there is a panel added. And this particular panel, you can actually rotate it also. And when you rotate it, you can give it any particular dimension or shape, because if you want these panels to come in your cut list, your manufacturing outputs, etc., then you can add panels like this and you can give it dimensions, material, finishes according to your requirements. And then these panels will come into your cut list as well. But always be careful when you're putting this, these dimensions are something that you can control here. So you should not put any dimension which is not possible. Like don't put, because it won't be possible to manufacture something which is 3000 mm in width or height, right? So in that way, you should be careful of what you're putting there. But otherwise, these are the ways that you can create different sorts of wall panelings, finishes, etc. And like we discussed, the concept of creating wall panels is very straightforward. Select the wall, go into wall tiling and cutting tool, and herein add a shape. When you add the shape, you can select the shape and give it any property you want, and that particular property you can create a panel accordingly. You can create you can also add like any, let's say you want to add any lights inside this. You have designs like that also where you can create any light. So if you want to have like a wall lamp added inside, then you can select the particular wall lamp and you can get it added in this particular space also. Like if you want a wall lamp here, you can get it added. If you want any sort of a design, like any art or paint work added to it, if you add paintings inside that, you can select, and you can add paintings also inside this. Like you can select this, let's say, and I'm adding a painting inside this. And what I'll do is, if I want to change the dimension of the painting,
I can actually change the height here. Let's say I'm putting a height of 1800 mm, and I'm placing it inside this. If I want to, if I want to understand what is the available dimensions, then I can select the wall. Let's say I'm selecting this particular wall here, and I'm generating a wall section elevation here. And when I'm selecting the wall section elevation here, I can go into a note and I can go into align. And herein, I can actually check what is the dimension available inside this particular space. It is 1435, and the width is, you can see this, right? That you can specify what is the width height that you want. So it's 604 and 1435. So you can go and give the same. I don't want, I want 1300 mm and 500 mm here so that it stays inside, and I can place it accordingly inside it. So in this way, you can actually add any paintings also inside it. If you want lights inside this, if you want linear or long lights inside it, you can have models put, and then you can add inside that as well. So this covers about wall finishes. We had a couple of queries, and we will start taking the queries now. We have a queue open for versatile creations. Yeah. Hi. I just need to know, how do you create tray lighting in this for fall ceiling? For the fall ceiling, right? Yeah, the tray lighting, the infused tray lights. You want to add tray light. You want to Yeah. add lights inside this, right? With a groove. With the groove, or you may say there's a gully or something, and I'm just trying to create an infused tray light, cove lighting. Cove lighting, right? Okay. Yeah. So if you want cove lighting to be put, then what you need to do is that, let's say I'm selecting this false ceiling, and this is the ceiling that I have right now. I will just edit the shape of it, and I will give it an offset. If you want all around it, I will make a peripheral false ceiling here where I'll copy it. Let's say I'm making a peripheral false ceiling here, and I will give it a depth of 75 mm, and because the false not 75 mm, I'll give it a depth of 40 mm, and I will shift the false ceiling down by a space of 75 mm for a space to add the false ceiling, cove light. So when I do that, you can see that there is a space that is created inside this. So in Fine. this particular space, you can add your cove lighting. Like what you can do is, you can go to insert, and you have strip light option here, and you can add a line like inside this. You can actually draw the outline here itself, and then offset it according to your requirement. Like if you do this, then offset, like just move it. You might have a specific dimension that you want, right? Let's say 75 mm inside you want. So you can simply move 75 mm inside, and you will have the strip light added there. Like you will see, this is the strip light that is added inside. And where is the light from? How will Sorry? it glow? This you have drawn a line, right? How No, does this the is light? the light. So when you select that particular light, this when you select that particular cove, right? You have Right. like you have the property of what intensity and color of light you want. Okay, okay. So it, in So your basically, we have to draw the cove, this line through the light, insert in light, right? no, the path, if you add strip light, if you insert and go to strip light, what you, the path that you draw, right? That is Right. that is a light itself. You just have to Okay. give it intensity, and it will glow accordingly. Okay, okay, fine. Thank you. You can inherit the property of the intensity and color from the SKU itself. Like if you want product wise, then even the product itself you can put it, or if you want in the design, you can simply select self and specify the intensity and color. And one Okay. thing I would just like to add, suppose there are some people who want to be very specific where they want to put the hang also here, like close this particular space. Yeah, yeah, that's right. Yeah. When you select it, we go into edit shape, and one second, sorry. Uh, when you select the ceiling here, you can go into create false ceiling here, and in this you can just simply select like another shape also you can create here, whichever shape you had created, right, of that Hmm. particular shape.
if you want it to be hanging till here, you can do that. You can apply it. And this shape, you give it a property of this particular shape that you have, you give it a property of, like you had given a front shift of 75, right? So give it a property of width of 75 and don't give it any front shift. So that it becomes another hang that it, and another block that hangs from there. So in that case, it will, Inside Yeah, vertical, inside fine, vertical. fine. it will become that basically. Okay. Okay. It is inside that I put, sorry. Like it will have a property like that, like you go inside. Mm-hmm. Fine. So you can create it accordingly. Okay. Thank you so much. No problem. Is there another question? We have a queue already. So ये जैसे हमने अभी कोव बनाया, इस कोव को हम वॉल में किस तरीके से, सेम तरीके से बनाएंगे? जी आप बना सकते हैं. आपका जो ये शिफ्ट वाला प्रॉपर्टी है, आप वो वॉल में भी आता है. तो लेट्स से इस पर्टिकुलर वॉल में हम टाइलिंग एंड कटिंग टूल से ये हटा देते हैं. And you can add a shape, let's say, right? When you're adding a shape here, and you're going to apply, and when you select this shape here, you can give it a front shift here also. The same concept you can use and create a panel there as well, and behind you can create one more panel where you can give a curve. You can extrude it. Let's say आपने 20 mm extrude किया और उसको front shift दिया 75 mm, right? So when you go back, you can see that this panel is has a space here. Then what you can do is you can simply insert a strip light. Sorry. What you can do is inside this particular space, you can put a strip light here inside this space. If you want one more space, one more covering behind, you can do that also. You can give one more shape here and give it a front. Just say how we did it in the other area, basically, you can do it in that way also. You have to give it a depth of 75 mm basically, and no front shift. Then आपका ऐसे करके बन जाएगा खाचा के साथ, right? Okay, Vijay, Yes, ma'am. you had a question? Yes, ma'am. मैम जैसे हम प्लान को ट्रेस कर लेते हैं, इसमें अगर हमारी वॉल एलिवेशन को भी हमें ट्रेस करना हो, उसका क्या प्रोसेस रहेगा? वॉल एलिवेशन को आपको सॉरी ट्रेस करना है Yes. from AutoCAD. Yes, ma'am. That is not possible, because if you look at it, the floor plan, you get it as a reference, but elevation is created out of a 3D product, right? So elevation you cannot you cannot take it, because to create an elevation, it has the software that we are offering is very rich in information, wherein every particular item that you are giving, it has multiple information attached to it. So AutoCAD drawing is nothing but a line. It's just a line or a polyline. So उसमें data ही नहीं है कि हम उस पे कुछ भी 3D बनाएं. Can So we just use it as a plan and draw इसको उसके ऊपर मॉडल करके एलिवेशन को then rotate कर दे पूरी एलिवेशन को? Is that possible? no, we don't currently offer that solution with us. We only offer an option of taking a floor plan as a reference, but we don't offer a solution where you can take the elevation for your reference. So basically, if we have to make something in elevation, we have to make make the model definitely, because the entire concept of Infurnia is that you make the 3D, all other items are auto-generated. Okay. Right? I joined in late, so मेरे को lights का basic पता नहीं चला. Can you please repeat if you can? We were discussing about
wall panelings and all. And if you want, we have a recording of this session. You can reach out to your customer service executive, and they will share the recording with you. You can go to the same. Okay. Right? Fine. Thank you. Is there any other question that we need to take today? मैम जैसे हमने अभी वॉल पैनलिंग्स करी, तो हम सेम वे से क्या डोर भी डिजाइन अपना कर सकते हैं? डोर के डिजाइन बेसिकली जो आपके हैं वो मॉडल्स आप ऐसे आप मॉडल्स चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ये तो पता है, लाइक बट डोर के काफी लिमिटेड डिजाइन है, फिर इसके भी हमें मॉडल्स ही डालने होंगे? हाँ, आप चाहे तो आप और मॉडल्स डलवा सकते हैं, आपके अलग अलग मॉडल डिजाइन है तो आप डलवा सकते हैं। अच्छा, बेसिकली मॉडल्स के लिए हमें आप ही को अप्रोच करना होगा डालने के लिए? नहीं, आप खुद डलवा सकते हैं। आप यहाँ पे बिल्डिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आप डोर्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कहीं, आप अपने कैटलॉग में सर्च कीजिए, आपको कहीं पे भी कुछ भी डलवाना हो तो आप वहाँ पे जाके सेम प्रोसेस से आप वहाँ पे 3D डलवा सकते हैं। जस्ट लाइक टेक्सचर्स? जस्ट लाइक टेक्सचर्स। आप जैसे टेक्सचर में एक डिजिटल इमेज अपलोड करते हैं, आप जब एक मॉडल आपको एक ऐसा आइटम डालना होता है, आपको एक 3D मॉडल डालना होता है। ओके। और मैम जैसे आपने वॉलपेपर का आज समझाया टेक्सचर डालना, अभी ना आजकल ट्रेंड में है कस्टमाइज वॉलपेपर्स बनना, ठीक है? कस्टमाइज वॉलपेपर का सपोज पिक्सल और काफी चीजें होती हैं, हमने वो डाला, बट हमें वहां पे क्या मेंशन करना होगा कि वॉलपेपर का साइज कैसे मेंशन करेंगे? अगर सपोज आप कोई वॉलपेपर डलवा रहे हैं, जैसे पर्टिकुलर वॉलपेपर है आपका, राइट, तो आप ये कर सकते हो, आपने वॉलपेपर डाल दिया, तो डालने के बाद आप आपके यहाँ पे मटेरियल्स आएगा, तो मटेरियल्स के अंदर आपको वो वॉलपेपर भी दिखेगा। जैसे ये वाला वॉलपेपर डाला था, तो इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो इसमें टेक्सचर का जो विड्थ और हाइट है आप स्पेसिफाई कर सकते हो। सपोज मैं टेक्सचर का विड्थ और हाइट 500 कर देती हूँ, ठीक है, और अप्लाई कर देती हूँ, तो ये छोटा हो जाएगा। गॉट इट, स्केलिंग हो जाएगी मतलब यहाँ से बेसिकली। तो आप अपना कस्टमाइज वॉलपेपर का आपका जो भी हाइट विड्थ है वो आप स्पेसिफाई करके डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। Any other questions that people have, Soulful? Yes, ma'am. Actually, I just wanted to know how to add a strip light between a skirting and a wall. Between a skirting and a wall? हाँ, नीचे की तरफ स्कर्टिंग के बिल्कुल ऊपर और वॉल के बीच में जैसे हम छोटा सा ग्रूव दे देते हैं, अगर हमें उसमें स्ट्रिप लाइट ऐड करनी हो तो। कैबिनेट की बात कर रहे हैं? हाँ जी, कैबिनेट में डालना है ना आपको? नहीं नहीं नहीं, कैबिनेट में नहीं, वॉल में। वॉल में डालोगे? अच्छा, वॉल में स्कर्ट? ये जैसे स्कर्टिंग है और वॉल है, इसके बीच में जब स्कर्टिंग हम वॉल की फेसिंग में देते हैं तो हम एक ग्रूव देते हैं, अगर हम उस ग्रूव को थोड़ा सा बढ़ा के प्रोफाइल लाइट डालना तो इसमें कैसे दिखाएंगे इसको? ठीक है, अगर आपको डालना है तो आप एक काम कर लीजिए। बेसिकली है तो कॉन्सेप्ट सेम ही। कि ये वाला आपका ग्रूव है, इसके ऊपर आप एक ग्रूव देना चाहते हैं, राइट? हाँ, ये जैसे स्कर्टिंग और वॉल जो है वो फेसिंग में है, तो बीच में हमने एक ग्रूव दिया हुआ है उसको यहाँ पर। तो यहाँ पे ग्रूव दे रहे हैं ना आप? हाँ, बीच में एक ग्रूव है। तो ठीक है, आप ये जैसे जो भी हाइट है आपका, अभी स्कर्टिंग का हाइट आपका 100 है, तो आप 101 से 120 तक दोगे, राइट? हाँ जी। तो आप वो वॉल को सिलेक्ट कीजिए, टाइलिंग और कटिंग टूल में जाइए, यहाँ पे एक ऐड शेप कीजिए और शेप ऐड कीजिए अपना 100 mm के ऊपर आप एक शेप ऐड कीजिए। यहाँ पे जैसे इतना इतना ही एग्जांपल लूंगी, 20 mm पर। तो ये एक शेप क्रिएट कर दिया आपने, और इस शेप में आपको ग्रूव क्रिएट करना है बेसिकली। तो आप क्या कीजिए, ये शेप अप्लाई कर दीजिए और इसको जो आप ग्रूव सिलेक्ट कर रहे हो इसको आप एक कट कर दीजिए, उसको कट आउट कर दीजिए, और जितना भी आपका ग्रूव का डेप्थ रहता है, मान लीजिए 30 होता है आपका, ठीक है, तो आप 30 डेप्थ डालिए उसका। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ पे कट आउट बन जाएगा, राइट? तो यहाँ पे कटआउट बन जाएगा, उसके अंदर आप डाल सकते हैं स्ट्रिप लाइट। ओके, ठीक है। और ये अगर पूरे घर में ही हमें अप्लाई करना हो तो कोई शॉर्टकट है या ऐसे एक एक करके करना होगा? माफ कीजिए, ये हमने थोड़ा सा यूनिक रिक्वेस्ट है, तो हमने Okay. इसका कभी कोई फीचर बनाया नहीं।
आपको वैसे करना पड़ेगा। बट अगर आप ये कर सकते हो कि आपको स्ट्रिप लाइट डालने की जगह आप इस पे कोई एक मटेरियल डाल दो जिसको, मतलब आई एम सॉरी, ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा बिकॉज हमने कभी Okay. ये नहीं बनाया। Okay. Fine. Thank you. थैंक यू। फर्स्ट Yeah, hi. Another thing I wanted to ask you is, जैसे हम लोग market जाते हैं, we choose some material for the client, some new marbles or some new wallpapers or anything, and we click the picture. Generally, what we do, we give it to our 3D designer the picture, and they put the material on the whatever requirement is. So, can we upload that pictures also in this catalog of this Infurnia? So in today's date, when your 3D visualizer is adding that particular thing to your design, he's also taking that image and adding it, right? So Right. It's going to be the same as we download it from Google. Same way we can do it here also. it's an image only, right? It's a JPEG image basically. Yeah, it's basically, yeah, whatever Yeah, we click from a phone or something. अब हमें क्या मतलब what software doesn't care no if you are taking a photo of it or if it's a Exactly. load. So when you are adding it, you can simply add a SKU here, like in the particular relevant option, and you can just add the SKU material here, material info. You can just put the high resolution image. It is not suggested that you put distorted images or anything because render will not come well. But if your visualizer is doing it at today's time, he must be aware of how to scale it and all also, right? Okay, So fine. you have to make sure that when you're putting the image, you are decently scaled, right? Okay, okay, great. And another thing is, just somebody asked you regarding the door designing also. So basically, what models we have in the software itself, we have that. But if we want to design our own doors, we cannot do that. The way we can do are the furniture. We can't design the doors. No, see, you need to understand that Infurnia supports cabinetry and everything, while Right. door designs and everything are a very modeling based design. It's All not right. it's not modular furniture. It's not manufacturing. It's a very model based designing. So while we are coming up with new things to support these as well, because we've got requests from our clients, we are coming up with things like this. But currently, you'll have to put up a model because it's not part of the core that Infonia supports. And the models would be OBG files OBG files, yes. if we want to download also. Okay, fine. Thank you. And it's a one-time activity. Like it's a one-time activity. You can just add it at one go, and you also have bulk create options. You don't have to go and create one every time. Like for wallpapers or anything that you want to do, right? We have bulk create options. Like when you go into, let's say, you want to add wall textures to it, and you have multiple wallpapers that you want. Here in the edit, Okay. you have bulk create. So you can go into bulk create, specify where you want to create it. I'm creating in We can create our own category. category or our own folder also, no? you can create own categories, but creating own categories, I would suggest you do a catalog management course first to understand how to create this. If you create it randomly, it might not show because there are multiple things that has to be correct. Like you Fine, have fine. to specify what is the category type so that it opens correctly. Like when you open a wall texture, if some types of finishes open up, right, versus when you select a cabinet, laminates or acrylics open up, so the software understands what is compatible with which. So you have to ensure that you give those specifications as well. So it is suggested कि जो categories बने, like whatever categories are made already, you create it inside that only, because all the categories are made inside that you can create it, Okay, okay, okay. right? Fine. So you can Nice. actually bulk create it also. Okay. Jatin, Hi, yeah. I wanted to ask you कि अगर जैसे हम अपलोड करते हैं मटेरियल इसमें और हमें उसे अप्लाई करना है किसी चीज पे, तो उसका मटेरियल को जैसे स्केल करना है तो वो कैसे होएगा? स्केल करना है मतलब मटेरियल का एक टेक्सचर जैसे एक वॉलपेपर का टेक्सचर है हमारा, जैसे हमने वॉल पे लगाया, वो टेक्सचर परफेक्टली नहीं आ रहा, हाँ तो वो उससे वो आप कर स्केल सकते हैं कैसे? ना कि अगर आप ये सपोज आपका वॉलपेपर है, ये इस टेक्सचर से लग रहा है, बट अगर आपको उसका बड़ा छोटा करना है उसका स्केल,
तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका मटेरियल्स ऑप्शन आएगा। तो मटेरियल्स के अंदर आप देखेंगे तो जैसे ये वाला मटेरियल ये है, आप नाम आपको दिख ही जाएगा, तो आप उसमें चेंज कर सकते हो और उसमें आपका टेक्सचर विड्थ और हाइट स्पेसिफाई कर सकते हो। सपोज इसको आप बड़ा करना है, अभी 700 बाई 700 करना है, तो 700 बाई 700 कर लेते हैं, तो आप अप्लाई करेंगे तो ये देखिएगा बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। हेलो 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 हाँ आई हेलो वांट जस्ट आस्क Atul, हेलो second. Atul, 1 second. We're just closing Jatin Shetty's query. We'll come to you. हेलो जी, आप पूछ रहे थे ना, ये आपको क्लियर हाँ हुआ? हाँ, वो मुझे क्लियर हो गया। मुझे ये पूछना था कि जैसे हम स्केचअप पे अगर मॉडल बना रहे हैं और हमने उसमें मटेरियल लगाया और ओबीजी फाइल्स बनाई हमने उसके थ्रू, फिर हम इसमें जब हम डालते हैं उस फाइल को, उसके अंदर वो मटेरियल एग्जैक्ट वैसा टेक्सचर नहीं आ रहा होता है, कभी कभार ऐसा होता है इशू ना। अगर आप देखेंगे वो ओबीजे फाइल का जो ऑप्शन आता है ना, ओबीजे हाँ फाइल अपना इमेज जो है वो बहुत ही लो रेजोल्यूशन में लेके आता है, तो उतना हाँ डेफिनेशन में वो नहीं आता है अगर आप देखेंगे। तो इसलिए आप कोई भी मटेरियल डालते, कोई भी फर्नीचर डालते हैं, उसका मटेरियल आप चेंज कर सकते हैं, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे आप मटेरियल खोलेंगे, कोई भी जैसे बेड सिलेक्ट कर लिया, उसका मटेरियल खोल लिया, आप उसमें चेंज करेंगे तो वो मटेरियल एग्जैक्ट नहीं लगेगा जैसे आपको चाहिए। ओके राइट, ग्रेट। विल टेक अप अतुल्स क्वेश्चन नाउ। हेलो जी, हाय। हाय do you have any example of 3D model that you can put into? All these are 3D models only, right? No. Suppose we are someone asks us about door or bed. कैटलॉग में जाके आप इंसर्ट करेंगे 3D मॉडल। I'm extremely sorry, but immediately मेरे पास we don't use any other software, so I don't have any other software to take it from and give it to you. But if you Okay. want, if you reach out to your CSM, they'll send you a video where you have recorded it and all. ओके और वो जो 3D फाइल रहेगी हाँ उसके अब ये बदल सकते क्या मटेरियल्स? हाँ, बदल सकते हैं। अभी हमने ये डिस्कस किया ना कि अगर ये 3D मॉडल हमने ऐड किया, तो ये 3D मॉडल आप ऐड करके डाला ना आपने, तो आप मॉडल सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सारे मटेरियल्स खुल जाएंगे, उसमें जितने भी मटेरियल्स है। क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट रहेगी ना, ये मॉडल्स के और वो 3D जो कैटलॉग में से डालेंगे उसकी प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट हो जाएगी ना। प्रॉपर्टीज से क्या फर्क पड़ता है आपको? आपको तो मटेरियल चेंज करना है ना। ठीक है, फाइल तो मतलब होगा, वैसे होगा आपका कहना। हाँ, उस फाइल के अंदर जितने भी मटेरियल्स आपने डाल रखे होंगे, इंफर्निया वो सारे मटेरियल डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है तो जैसे इसमें था एक वुड और एक मैट्रेस, ठीक है, ठीक है तो हम आपको दोनों चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके ठीक है, तो आप मॉडल ऐड कर दो, फिर ठीक है मटेरियल चेंज करते रहो। ठीक है ओके, गॉट इट। great, thank you. Is there any other question that we need to take today? मैम ग्लास रेलिंग कैसे ऐड करते हैं? और मैम मिरर अटैच करना भी एक बार बता दीजिए। मिरर अटैच करना तो आप उसका मिरर तो मटेरियल है, तो yes. आप कोई भी मटेरियल में आप प्रॉपर्टीज डाल दोगे तो वो बन जाएगा। जैसे इसके अंदर आप सोचिए कि आपको यहाँ पे एक ग्लास लगाना है अंदर, राइट? तो ये अगर सिलेक्ट कर लोगे तो इसके अंदर actually I'll just make it here if you are okay with it. यहाँ पे जैसे आप टाइलिंग एंड कटिंग टूल में जाएंगे तो यहाँ पे आप ऐड शेप कर दीजिए कुछ भी। यहाँ पे हमने एक शेप ऐड कर दिया, उसको अप्लाई कर दिया, एंड अप्लाई करके ये वाला जो मटेरियल है, आप कोई भी मटेरियल सिलेक्ट कर लीजिए जिसका अभी तक आपका डिजाइन में कोई यूज नहीं हुआ हो कहीं भी जगह पे। तो लेट्स से हम पेंट में यूज कर लेते हैं उसको एंथ्रासाइट ग्रे, तो हमने यूज कर लिया, और इस एंथ्रासाइट ग्रे को हम मटेरियल स्पेसिफाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मटेरियल्स आएगा और मटेरियल्स में के अंदर आपको दिखेगा एंथ्रासाइट ग्रे, तो आप इसको चेंज करेंगे तो इसके प्रॉपर्टीज जो है आपको चेंज करने हैं। आपको रफनेस बहुत कम कर देना है, स्पेक्युलर ज्यादा कर देना है, तो वो वाला जो मटेरियल है वो आपको रेंडर में ग्लास की तरह दिखेगा।
सॉरी मिरर की तरह दिखेगा। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि कौन से प्रॉपर्टीज डालने हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो फिनिशेस हार्डवेयर में आपके पास मिरर फिनिशेस होंगे, तो इसके अंदर में आप प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो। जैसे कोई भी मिरर यहाँ पे है, आप इसकी प्रॉपर्टीज अगर देखोगे तो प्रॉपर्टीज में आपको एग्जैक्टली दिखेगा कि मिरर की प्रॉपर्टीज में आपको क्या क्या डालना होता है। रिफ्लेक्शन कितना डालना है, स्पेक्युलर रफनेस मेटलनेस कितना डालना है, रिफ्लेक्शन कितना डालना है, इससे आप कॉपी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो उस मटेरियल को आप ये प्रॉपर्टी दे दोगे तो फिर उसमें आ जाएगा, आपके रेंडर में वो मिरर की तरह दिखेगा। ये आपका मिरर का क्वेश्चन होगा, क्या आपको समझ में आया? यस मैम। और आप कुछ ग्लास रेलिंग, ग्लास सीलिंग, रेलिंग रेलिंग ग्लास रेलिंग, ओके। तो ग्लास रेलिंग का तो आप जैसे इंसर्ट पे, सॉरी आर्किटेक्चर पे जाएंगे, तो आर्किटेक्चर पे जाएंगे तो आपका रेलिंग ऑप्शन आएगा। तो आपको जहाँ पे भी रेलिंग डालना है आप यहाँ पे लाइन बना दीजिए। सपोज आपको यहाँ से रेलिंग बनाना है यहाँ तक, तो आप ये उसको पाथ बता दीजिए तो वो पाथ बन जाएगा। और इसका जैसे आपका ये रेलिंग बना, तो इसके रिपीटर्स को अगर आप जैसे आपको जो भी चेंज करना हो इसमें, कि आपके जो रिपीटर्स है आपको चेंज करना है, राइट? हाँ, रिपीटर्स, आपको रिपीटर्स में चेंज मॉडल करना है। और आपको जो भी मॉडल चाहिए आप यहाँ पे, एक्चुअली मेरे पास ग्लास वाला मॉडल नहीं है। जैसे बैलुस्टर, ये अभी एक सिंगल बैलुस्टर है, राइट? तो अगर आप इसमें ग्लास वाला बैलुस्टर लगवा देंगे तो ये ग्लास जैसा ऐड हो जाएगा। आई थिंक इन द एड फ्रॉम वेयरहाउस ऑप्शन यू हैव ग्लास ऑप्शंस आल्सो, बट अगर आपको रेलिंग्स के हिसाब से लगवानी है देन यू कैन डू दिस, लाइक यू विल हैव टू ऐड फ्रॉम वेयरहाउस अ ग्लास रेलिंग एंड देन सिलेक्ट इट। बट अगर आपको सिर्फ मतलब रेलिंग के हिसाब से आपको सिर्फ यहाँ पे ग्लास ही लगवाना है तो आप ये भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने उस टाइम पे किया था, राइट? कि सपोज आपका कोई स्पेस है इस पर्टिकुलर वॉल में, जैसे हमने इस पैनल के लिए किया था वैसे भी कर सकते हो कि आप टाइलिंग एंड कटिंग टूल में जाए और आप कोई भी एड शेप करे, आप उसमें जैसे आपको इस तरीके के ग्लास रेलिंग्स चाहिए, ठीक है? और ये ग्लास रेलिंग बन गया और इसमें आप इसको ट्रांसपेरेंट मटेरियल कोई फिनिश दे दीजिएगा, जिसमें आप उसका मटेरियल का आप कोई भी टेक्सचर जैसे डाल रहे हो और उस टेक्सचर का आप ट्रांसपेरेंसी 100% कर दीजिएगा या कुछ कर दीजिएगा। तो जैसे कोई भी फिनिश डाल रहे हैं तो उसको ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करके आप अलग अलग पैनल्स डाल सकते हैं और इसमें फ्रंट शिफ्ट डाल सकते हैं जितना भी आपको वॉल से चाहिए, तो उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये आप कॉपी कर लीजिए, जैसे प्रॉपर्टीज में हमें जाके इसको ट्रांसपेरेंट करना होगा। हाँ, इसमें जाके आप जैसे ट्रांसपेरेंट कर दीजिए उसको और इसको आप ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, वो जो भी मटेरियल वो रेंडर में ट्रांसपेरेंट दिखेगा। ऐसे करके आप ऊपर अगर डालना है ऊपर भी एक शेप डाल दीजिए, अगर मतलब ये आप कर सकते हैं अगर आपको बिल्डिंग के ऑप्शन से नहीं करना है तो। मतलब हमें भी वो डलवाना पड़ेगा वेयर हाउस से, जैसे लाइक बोलना पड़ेगा आपको? हाँ, वो वेयर हाउस में अगर आपको ग्लास फ्रेम्स चाहिए तो वो हमको दिलवाना पड़ेगा, बट आप वैसे वॉल में शेप बना के भी मूव कर सकते हैं। मतलब ये आपका इमीडिएट सोल्यूशन हो जाएगा ना, इसमें बट आपको दिलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपके टेम्पलेट में ऑलरेडी ग्लासेस का रेलिंग बनी हुई है। हमने भी हमने तो वो रेलिंग से बनवाई, राइट? वहां पे हमने एड फ्रॉम वेयर हाउस करके बनवाए हैं। ओके तो वो हम करवा लेंगे, कोई बात नहीं। ओके। Matlab, there are two ways. You can add a railing like this by going into architecture and rails option, or you can simply make a shape and then give it a front shift here. ठीक है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। Right? Is there if there is no other question, then we would like to conclude this session now, and we will see you next time.
We'll have a recording of this session also. If anyone has missed the initial parts, then you can reach out to your CSMs and take the recordings by tomorrow or day after. Thank you.